हाय गाइस, दिस इज पुनीत एंड यू आर वाचिंग नॉलेजिस्ट। टॉपिक चल रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लास है हमारी 6। सो अभी तक काफी कुछ कवर किया जा चुका है, लाइक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसीबीज, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डेडलॉक, सिंक्रोनाइजेशन। ये सारे हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। बात होने वाली है आज मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान से देखेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें, काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को कवर किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज मेमोरी के साथ में। मेमोरी क्या होता है? सो कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सम डाटा represented in binary form. On the basis of various functions, memory can be classified into various categories. We will discuss each of them later in the detail. So basically क्या है, कोई भी डाटा जब हम बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर कराते हैं तो वो कंप्यूटर मेमोरी है एक प्रकार से। ठीक है, डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। अब इस डाटा को वेरियस मेथड से डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये किस किस टाइप का है। ठीक है, बेसिकली टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस टेक्नोलॉजी पे आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से मेमोरी को बांट सकते हो। ठीक है, या टाइप ऑफ द डाटा के हिसाब से उसे बांटा जा सकता है, उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अ कंप्यूटर डिवाइस दैट इज कैपेबल टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन और डाटा टेम्पररली और परमानेंटली इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो एक कंप्यूटर का कोई एक डिवाइस जो कि किसी प्रकार के डाटा को थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए स्टोर कर पाए तो वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। अब ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के स्टोरेज डिवाइस आते हैं। एचडीडी होता है, एसएसडी होता है, रैम है। ठीक, ये सभी मेमोरी डिवाइसेस है। मेमोरी कार्ड हो गए, पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक टेप हो गए, सीडी डीवीडी, ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर करने में मदद करते हैं। अब इसमें से कुछ होते हैं जैसे कि रैम, ये टेम्पररी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक हमारे स्टोरेज डिवाइसेस तो सभी को क्लियर होंगे। बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में आगे। मेमोरी तो आई थिंक क्लियर है। अब कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता कैसे, हाउ डज इट एक्चुअली स्टोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अ मशीन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 और 1. Computer converts each data into binary language first and then stores it into the memory. तो बेसिकली कंप्यूटर बस दो चीजें जानता है, जीरो को या वन को, राइट। तो अब जीरो क्या है और वन क्या है, जैसे कि रैम में बात करें, अगर रैम में डाटा को स्टोर कराया जा रहा है, जस्ट सपोज हम रैम में डाटा को स्टोर करा रहे हैं, वी आर स्टोरिंग द डाटा इन द रैम, देन द एब्सेंस ऑफ करंट at a point or a memory location is called zero, and the presence of current at that point or memory address is called one, right? So basically जो रैम होता है वो छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। याद रखना है, रैम में हर एक मेमोरी एड्रेस एक फ्लिप फ्लॉप होता है। अगर वहां पे करंट स्टोर नहीं करते हैं तो वो जीरो होता है, वहां पे करंट स्टोर होता है तो वो वन होता है। आई थिंक ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं अपना, क्योंकि आप सभी आईटी से रिलेटेड हो, आईटी ऑफिसर्स के लिए बात कर रहे हैं, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होगा आईटी का होगा, आप सभी ने फ्लिप फ्लॉप के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आगे उसको डिटेल में देख भी लेंगे, लेकिन हाँ, फिलहाल फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली जहां पे करंट स्टोर नहीं है वो जीरो है, जहां पे करंट स्टोर है वो वन है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स इफ वी हैव अ प्रोग्राम line written as int I is equal to 10. मान लो कोई एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास एक लाइन लिखी है, इंटीजर में I की वैल्यू जो है वो है 10. Then the computer converts it into binary language and then stores it into the memory block. तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस 10 को कहीं ना कहीं बाइनरी में चेंज करेगा, ठीक है, और 10 उसको कंप्यूटर में स्टोर कराएगा जीरो और वन के फॉर्म में। सो the representation of
int I is equal to 10 is shown. So बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो int I is equal to 10. ठीक है, ये हर एक बॉक्स एक मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी एड्रेस, जिसके अंदर 0 या 1 स्टोर होते हैं. ठीक है, तो ये इस ब्लॉक को इसने नाम दे रखा है I, इस पूरे ब्लॉक को, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके I की वैल्यू को भरता है, क्योंकि वैल्यू काफी छोटी है तो वो यहाँ पे भरी हुई है. ठीक है, ये होता है हमारा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 3 पे 1 है यानी कि 8, और 2 की पावर 1 पे 1 है यानी कि हमारा 2. तो 8 प्लस 2 हमारा 10 स्टोर इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है. ठीक है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वो आगे के मेमोरी बिट्स के अंदर उसे स्टोर कराएगा. तो हर एक बिट एक मेमोरी एड्रेस है. ठीक है, इंटीजर अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग स्पेस कंज्यूम करते हैं. कुछ जगहों पे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड सो ऑन अलग अलग होता है. सो द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इज 1010. Here we consider 32 bit system, therefore the size of int is 2 byte, यानी कि 16 बिट 2 बाइट होती है 16 बिट की. 32 बिट सिस्टम में इंटीजर का नॉर्मली 2 बाइट हमें डाटा मिलता है. One memory block stores 1 bit. If using signed integer, then the most significant bit in the memory array is always the signed bit. तो basically अगर हम साइंड इंटीजर्स को डिनोट करना चाहते हैं तो जो हमारी पहली बिट होती है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग की बिट, वो हमारी साइंड बिट रहती है. ठीक है, याद रखना है अगर कभी पूछा जाता है कि साइंड बिट कौन से मेमोरी लोकेशन पे होती है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या द फर्स्ट बिट इन द एड्रेस इज नोन एज साइंड बिट. ओके, इसको याद रखना है. प्लस मेमोरी एड्रेस जो शुरू होता है वो पहली बिट से इसी साइंड बिट के साथ में शुरू होता है. ठीक है, आगे 16 बिट तक का सारा एरिया आई के लिए डिनोटेड है. ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये भी हमारे लिए. ये पूरा का पूरा एक प्रकार से रैम में डाटा स्टोर कराने का तरीका है. ये हमारा मेमोरी एड्रेस हो जाएगा जो हमारी साइंड बिट है, जो इसका एड्रेस होगा सपोज दैट 429. ठीक है, ये इसका कोई एड्रेस है. तो यहाँ से लेके आगे 16 डिजिट सारी आई के लिए डिनोट हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट बिट या नेक्स्ट हमारा वेरिएबल स्टोर होगा. ठीक है, ओके. कुछ और बातें जो कि हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए. तो साइंड बिट वैल्यू 0 रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर. अगर साइंड बिट में आपका यहाँ पे 0 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है. साइंड बिट अगर 1 है तो ये नेगेटिव वैल्यू है. इस चीज को याद रखें कि साइंड बिट में 1 का होने का क्या मतलब होता है. ठीक है, ये साइंड बिट में 0 होने का क्या मतलब होता है. ठीक, इट इज आल्सो अ important question. So here the range of value can be stored using the memory array is 32768 to 32767. Sorry, minus का 32768 to प्लस का 32767. So basically अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप जानते होगे इंटीजर की ये रेंज होती है. ज्यादातर जगहों पे C से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बेसिक एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ाई जाती है C. तो इंटीजर की रेंज क्या होती है, माइनस के 32768 से लेके प्लस के 32767 तक होती है. बात करें अगर अनसाइंड बिट, तो अनसाइंड बिट 0 से लेके, अब ये रेंज दुगनी हो जाएगी तो दोनों को ऐड कर देंगे, 65535, ये रेंज हमारी पहुंच जाएगी. ठीक है, ओके. नीड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं. द CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेन मेमोरी, रजिस्टर्स एंड कैच ऑफ द सिस्टम. The program always executes in main memory. The size of main memory affects degree of multiprogramming to most of the action. If the size of main memory is larger, then CPU can load more process in the main memory at the same time, and therefore will increase degree of multiprogramming as well as CPU utilization. Therefore, we can state that the CPU utilization will be increased if the memory size get increased. So, देखो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी जो होती है वो टोटली अफेक्ट करती है हमारे CPU यूटिलाइजेशन को या CPU की वर्किंग. मान लो मेन मेमोरी इन द सेंस रैम. बात कर रहे हैं सपोज दैट रैम आप पे 1 GB है, तो इसमें आप 4 प्रोग्राम लोड कर पा रहे हो. अब यही मैं कहता हूं 2 GB हो गई,
तो अगर 1 GB में 4 प्रोग्राम आ रहे थे तो 2 GB में 8 प्रोग्राम आने चाहिए अप्रोक्स, अगर सेम साइज की हम बात कर रहे हैं तो। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये मल्टी प्रोग्रामिंग को इफेक्ट करता है। अगर हमें मल्टी प्रोग्रामिंग चाहिए, ज्यादा प्रोग्राम एक बार में रन करने हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम पे यूज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें मेन मेमोरी की ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मेमोरी साइज के साथ में बढ़ जाएगा। सिंपल फंडा है, मेमोरी साइज या मेन मेमोरी साइज बढ़ाओ, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, लेकिन एक एक्सटेंट तक। ठीक है, एक एक्सटेंट तक इन द सेंस, बेसिकली अब आप ये सोचो कि आप 1 टेराबाइट की रैम लगा दोगे, ठीक है, और सीपीयू फुल यूज होने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, नॉर्मली 16 GB 32 GB पे जाके इतना सारा डाटा हो जाता है सीपीयू के लिए कि वो ऑल टाइम बिजी रहने लगता है। ठीक है, 16 GB रैम या 32 GB रैम पे इतना डाटा सीपीयू के लिए अवेलेबल होता है कि वो ऑल टाइम बिजी रहे। इट विल बी बिजी all the time if you have approx 32 GB of RAM. Okay, so it will have enough data to process all the time. So degree of multi-programming will increase with the memory size. Remember that. Okay, now let's talk about fixed partitioning system. What is fixed partitioning system? क्या होता है? So ये बिल्कुल स्टार्टिंग की टेक्निक है, बहुत ही सिंपल होती है। लोड मोर देन वन प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी, आल्सो नोन एज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। फिक्स्ड पार्टीशनिंग सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मैं एक हल्का सा आपको बता देता हूँ। मेमोरी के फिक्स्ड चंक्स काटे जाते हैं। सपोज दैट 4 KB के चंक्स काट दिए, हर एक टुकड़ा 4 KB का होगा। ये हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग सिस्टम कहलाता है। इसके फायदे होते हैं, इसके कुछ नुकसान होते हैं। सपोज दैट वी हैव 9 KB ऑफ डाटा टू बी स्टोर, देन पहला वाला ब्लॉक पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, दूसरा वाला पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, और तीसरा वाला भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पहले के 4 बिट यूज कर लिए, बचे कितने 5, फिर हमने 4 बिट और स्टोर करा लिए, बचे कितने 1। अब एक के लिए सिंगल की जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो फिक्स्ड मेमोरी साइज है 4 बिट का, 4 KB का। तो 4 KB के साइज में अब 1 KB डालना है, तो 4 का पूरा यूटिलाइजेशन माना जाएगा, उसमें दूसरा प्रोग्राम स्टोर हो नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड पार्टीशनिंग में नुकसान हो जाता है। लेकिन टोटली ये सारा का सारा डाटा एक साथ स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फायदा मिल जाता है। तो दैट्स व्हाई इसे कहते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, यानी कि लगातार एक साथ जुड़ा हुआ डाटा स्टोर होना। ठीक है, मेमोरी जो एलोकेट होगी वो एक सीरीज में, एक लाइन से जुड़ी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा अलग पड़ा है, एक टुकड़ा अलग पड़ा है मेमोरी में। ठीक है, so that is fixed partitioning. In this technique, the main memory is divided into partitions of equal or different sizes. The operating system always resides in the first partition, while the other partitions can be used to store user processes. The memory is assigned to the processes in contiguous way. So, in fixed partitioning, the partitions cannot overlap. A process must be contiguously present in the partition for the execution. तो क्या कहना चाहते हैं भाई कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, पहले तो उसके तो नॉर्मली 2 हिस्से होते हैं। एक ओएस के लिए, जो स्टार्टिंग का हिस्सा होगा वो ओएस के लिए कटेगा सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया, जो स्टार्टिंग के हिस्से थे ओएस ने उसमें लोड होने के लिए अपने लिए जगह बनाई। ठीक है, अब वो तो अपनी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से जगह बना रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ नुकसान होते हैं। वो एक बार में इतनी जगह एक्वायर कर लेता है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? सपोज दैट एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होके चलने के लिए, जस्ट एक एग्जांपल के लिए 800 MB चाहिए, तो वो पहले 800 MB एक्वायर कर लेगा और फिर आगे का हिस्सा छोड़ देगा बाकी प्रोग्राम्स के लोड होने के लिए। बट क्योंकि हम पूरी तरीके से तो यूटिलाइज करते नहीं है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी भी,
तो ऐसा हो सकता है वो 700 MB में ही अपना काम कर पाए, राइट, और बाकी 100 MB हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वे में उसे रहना है, इसलिए वो पहले ही इसे एक्वायर कर लेता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्वायर large amount of memory, okay, and that is not dynamic, it is fixed, so therefore it will not be released for other programs. Then other चीजें क्या हैं, पार्टीशंस ओवरलैप नहीं हो सकते, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होंगे, और कोई भी एक प्रोसेस जो होगी वो कंटीजियस प्रोसेस होगी, यानी कि एक साथ होगी पूरी की पूरी। अब सपोज दैट ये हमारा पहला प्रोसेस थी, यहाँ पे मेरी दूसरी प्रोसेस स्टोर हुई, यहाँ पे मेरी तीसरी प्रोसेस स्टोर हुई, उसके बाद ये दूसरी प्रोसेस बंद हो गई, ठीक है। तो अब हम पे 2 मेमोरी लोकेशन फ्री पड़े, ठीक है। अब मेरे पास एक तीसरी प्रोसेस आई जो कि थी 16 KB की। अब ये यहाँ पे फिट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम पे 2 ही टुकड़े, हो सकता है मेरे पास 2 टुकड़े नीचे भी हों, लेकिन ये अभी भी फिट नहीं होगी, क्योंकि ये 2 टुकड़े अलग हैं और वो 2 टुकड़े अलग हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड पार्टीशनिंग में ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। तो कॉन्स एंड प्रोस को जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, पहली चीज जो हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है, डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, वो है क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, if the size of process is lesser than the total size of the partition, then some size of the partition get wasted and remain unused. This is wastage of the memory and called internal fragmentation. तो उस फिक्स्ड पार्टीशन के साइज से अगर छोटी प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं वो एक आपका लॉस है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था। अब यहाँ पे एक बार दोबारा देख रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास पार्टीशन है 4 MB के, 4 MB के एक सिंगल सिंगल पार्टीशन है। अब यहाँ पे होता क्या है, पहली प्रोसेस 3 MB की थी, लोड हो गई, 4 MB घेरा, दूसरी प्रोसेस भी 3 MB की थी, लोड हो गई, 4 MB घेरा, तीसरी प्रोसेस भी 3 MB की थी, 4 MB घेरा, चौथी ने भी सेम वही किया, ठीक है। अब हम पे एक फिफ्थ प्रोसेस आई, वो भी 4 MB की है, लेकिन 4 MB अवेलेबल है, 1 2 3 एंड 4, there are 4 MB available, but they are not contiguous. That's why process 5 will not be loaded. We have unused space of 4 MB, but it is not contiguous. That's why it will be not loaded. Okay, so that's the problem. Then there is external fragmentation. The total unused space of various partitions cannot be used to load the process, even though there is space available, but not in contiguous form. Just suppose हमारे पास मान लो ये प्रोसेस 2 जो है ये यहाँ से खत्म हो गई, इसको फ्री कर दिया, पार्टीशन 2 को हमने फ्री कर दिया। अब हम पे एक नई प्रोसेस आई, प्रोसेस 5, जो कि 6 MB रिक्वायर करती है, लेकिन 6 MB तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं कंटिन्यूअस में, सिर्फ 4 ही MB है। तो प्रोसेस 3 जब यहाँ से खत्म करेगी तो ही ये लोड हो सकती है, वरना लोड नहीं हो सकती। अगर 2 ऐसी प्रोसेस जो कि बगल बगल हों वो क्लियर हो जाए, तभी प्रोसेस 5 जो है वो लोड हो सकती है, वरना वो लोड हो ही नहीं सकती। तो ये एक और हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशन में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, एक और ड्रॉबैक है फिक्स्ड पार्टीशन का, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फिक्स्ड पार्टीशन के। बेसिकली हमारे क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देन लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस, if the process size is larger than the size of maximum size partition, then the process cannot be loaded into the memory. Therefore a limitation can be imposed on the process size, that is it cannot be larger than the size of the largest partition. तो जैसे कि हमने बात करी, डिफरेंट पार्टीशन साइज हो सकते हैं फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन में भी, जैसे कि सपोज दैट पहला 4 का हो गया, दूसरा 8 का हो गया, तीसरा 8 का हो गया, चौथा 4 का हो गया, इस तरीके से हो सकते हैं। तो जो भी हमारा मैक्सिमम पार्टीशन है उसके साइज से अगर ज्यादा बड़ा हमारे पास प्रोसेस लोड होने के लिए आ जाता है तो वो लोड नहीं हो सकता, ये भी एक हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोसेस का साइज होता है उससे ज्यादा ही बड़े पार्टीशन बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये हैंडल किया जा सकता है, इट कैन बी हैंडल्ड इजीली विद प्रोग्रामिंग, so no need to worry about that. Then degree of multi programming is less. यहाँ पे degree of multi programming काफी कम होती है. By degree of multi programming we simply means the maximum number of process that can be loaded into the memory at the same time. So degree of multi programming क्या होता है, एक बार में कितनी प्रोसेस को लोड कराया जा सकता है, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है. In fixed partition, degree of multi-programming is fixed and very less due to the fact that the size of partition cannot be varied according to the size of the process. तो degree of multi-programming यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि पार्टीशन पहले से कटे हुए हैं, तो जितने पार्टीशन है उतने ही प्रोसेस लोड हो सकती है. प्लस अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास शुरुआत में आपने प्रोसेस लोड करी, बड़ी बड़ी थी, सारी लोड हो गई, उसके बाद एक और बड़ी प्रोसेस आती है लेकिन उसके लिए जगह नहीं बची है, छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं लेकिन बड़ी प्रोसेस के लिए जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है. याद रखना है, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट बताए हैं अब तक. ओके, अब आते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग. बात कर लेते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग क्या होता है. सो डायनेमिक पार्टीशनिंग, तो अभी हम बात कर रहे थे फिक्स्ड के बारे में. फिक्स्ड यानी कि स्लॉट कटे हुए थे, बाद में अप डाउन नहीं हो सकते, छोटे बड़े नहीं कर सकते. लेकिन एज द नेम सजेस्ट, इन द डायनेमिक पार्टीशन we can change the partition size according to our need. So in dynamic partitioning tries to overcome the problems caused by fixed partitioning. In this technique the partition size is not declared initially start के टाइम पे हम इसमें partition size declare नहीं करते हैं. It is declared at the time of process loading. प्रोसेस लोड होने के टाइम पे इसे डिक्लेयर किया जाता है. जब प्रोसेस लोड होने वाली है, सपोज दैट 5 MB की लोड होगी, तो 5 MB का पार्टीशन साइज बना दिया जाएगा. फिर 2 MB की लोड होनी है तो उसके बाद 2 MB का पार्टीशन साइज बना. सो द फर्स्ट पार्टीशन इज रिजर्व्ड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. द रिमेनिंग स्पेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. द साइज ऑफ ईच पार्टीशन विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द प्रोसेस. The partition size varies according to the need of the process so that the internal fragmentation can be avoided. So basically the first problem, internal fragmentation, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से रिजॉल्व करते हैं. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या था, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं. सपोज दैट I have a partition of 4 MB that is fixed, it will be 4 MB, and if the process is of 3 MB, then it will waste that 1 MB space that can be utilized, right? तो 3 MB में तो process हमारी आ जाएगी, but this 1 MB will be wasted because of fixed partition, and this is internal fragmentation. एक फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर और स्मॉलर चंक्स कट जाना, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बट दैट इज रिजॉल्व्ड इन दिस डायनेमिक पार्टीशनिंग. इफ वी हैव अ process of 5 MB to be loaded, then it will create a partition of 5 MB only. And then if we want to load a 2 MB process, then it will create a partition of 2 MB, then 3 MB, 3 MB. Then if we want to load 4 MB, then it will create a new partition of 4 MB and so on. So there will be no internal fragmentation in dynamic partitioning. So advantages of dynamic partitioning. Let's see what are the advantages. First of all, as we talked, no internal fragmentation will be there. So given the fact that the partitions in dynamic partition are created according to the need of the process, it is clear that there will be not be any internal fragmentation because there will not be any unused remaining space in the partition, right? So if we want to load a 5 MB process, then only a 5 MB fragment will be drawn from the main memory, right? So no internal fragmentation. Then no limitation on the size of the process.
The second problem that we face, that we cannot load a process which is larger than the fixed partition size, right? If the partition size is 4 MB, the maximum partition size is 4 MB, then we should always consider that, and we cannot load a 5 MB process because the maximum partition that is allowed is 4 MB. But in dynamic partitioning, there is no maximum limit. If we want to load a 50 MB process, then it is quite possible. In fixed partitioning, the process with the size greater than the size of the largest partition could be loaded due to the lack of sufficient contiguous memory. Here, in dynamic partitioning, the process size can't be restricted since the partition size is decided according to the process size. So basically, if there is a process of 50 MB, then we can load that easily. Then degree of multi-programming is dynamic. Okay, this is also important. If you load larger programs, the degree of multi-programming will be less. If you load smaller processes, then there will be many smaller processes and the degree of multi-programming will increase. So due to the absence of internal fragmentation, there will not be any unused space in the partition as more process can be loaded in the memory at the same time. So it is dynamic according to the load method. Now let's talk about the disadvantages of dynamic partitioning. What are the disadvantages in dynamic partitioning? First one is external fragmentation. It is really important. What is external fragmentation? Let's see. If there if three processes P1, P2 and P3. So P1 is 1 MB, P2 is 3 MB and P3 is 1 MB are being loaded in the respective partition of the main memory. And then after some time, P1 and P3 got completed and their assigned space is freed. Now there are two unused partitions, 1 MB and 1 MB. Like P1 was 1 MB and P3 was 1 MB. So there is a total 2 MB free space, right? Okay, available in the main memory, but they cannot be used to load a 2 MB process in the memory since they are not contiguously located. So as we talk, basically जो हमारे पास फ्री स्पेस है वो कंटेजियस नहीं है, इसलिए एक बड़ी प्रोसेस लोड कराना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है. The rule says that the process must be contiguously present in the main memory to get executed. We need to change this rule to avoid external fragmentation. So जो अभी तक बात हो रही थी वो ये थी कि जो भी प्रोसेस हुई वो कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं स्टोर होती, बट अगर हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी, इस ड्रॉबैक को भी हमें हटाना है, तो हमें क्या करना होगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को भी हटाना होगा कि हमें प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली लोड करानी है, वो भी हमें ये रूल हटाना पड़ेगा. सो डायनेमिक पार्टीशन का एक और डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स मेमोरी एलोकेशन. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज होती है मेमोरी एलोकेशन. यहाँ पे किस तरीके से होती है उसको देखते हैं. तो इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग द लिस्ट ऑफ पार्टीशंस इज मेड वंस एंड विल नेवर चेंज, बट इन डायनेमिक पार्टीशनिंग द एलोकेशन एंड डीएलोकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिंस द पार्टीशन साइज विल बी वेरीड एवरी टाइम व्हेन इट इज असाइन्ड टू अ न्यू प्रोसेस. OS हैज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द पार्टीशंस. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है? पहले चीज सिंपल थी, ब्लॉक्स कटे हुए थे, उन्हीं में लोड होना था. बट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, सपोज दैट 2 MB लोड हो गया, तो 3 MB लोड हो गया, तो 5 MB लोड हो गया, तो 2 MB लोड हो गया, तो 7 MB लोड हो गया. अब ये यहाँ पे 5 MB ये फ्री हो गया, तो कंप्यूटर को ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेमोरी फ्री है, कहाँ पे मेमोरी भरी हुई है, प्लस कितनी मेमोरी यहाँ पे खाली है. अब यहाँ पे भी 2 MB ये भी खाली हो गया, तो यहाँ पे टोटल 7 MB खाली है. ठीक है, तो कंप्यूटर को इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. हर बार जब भी प्रोसेस खाली हो जाएगी तो अब उसे हिसाब रखना पड़ेगा टोटल फ्री मेमोरी स्पेस 7 MB. ठीक है, ये हिसाब उसे लगाना पड़ेगा. ठीक है, और ये बार बार जब भी कोई चीज लोड होगी या
अनलोड होगी तो ये करना पड़ेगा। आप सपोज दैट यहाँ पे 3 MB की एक प्रोसेस लोड हो गई, यहाँ पे हमारे पास 7 MB थे, उसमें से 3 MB की प्रोसेस लोड हो गई, तो अब हमारे पास 3 MB यहाँ पे लोड हो गया और नीचे बच गया हमारे पास कितना, 4 MB। तो अब कंप्यूटर को ये फिर से रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक 4 MB हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक है, एंड सो ये बार बार ट्रैक करना पड़ता है। अब ऊपर 2 MB फ्री हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे 2 MB फ्री है, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना मुश्किल काम हो जाता है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन आर डन वेरी फ्रीक्वेंटली इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड द पार्टीशन साइज विल बी चेंज्ड एट ईच टाइम, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ओएस टू मैनेज दैट। तो बेसिकली प्रोसेस को लगातार लोड अनलोड होती रहती है, ठीक है। मेन मेमोरी में इट इज क्वाइट फ्रीक्वेंट टू लोड एंड अनलोड अ प्रोसेस, so for an OS to keep track all the record, it is going to be difficult and the CPU utilization will be used in this process also. फिर आते हैं compaction पे. What is compaction? Let's see. So we got to know that dynamic partitioning suffers from external fragmentation. However, this can cause some serious problems. हम ये जानते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, उसको थोड़ा समझते हैं. So we can also use compaction to minimize the probability of external fragmentation. In compaction, all the free partitions are made contiguous and all the loaded partitions are brought together. By this, we can store the bigger process in the memory. This technique is also called defragmentation. ये आपकी नॉर्मल मेमोरी में भी होता है, डिफ्रेगमेंटेशन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास. अब होता क्या है डिफ्रेगमेंटेशन? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. फ्री स्पेस एक साथ कर दो और भरा हुआ स्पेस एक साथ कर दो. दैट इज डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉम्पैक्शन, राइट? सो as shown in the image, the process P5, which could not be loaded into the memory due to the lack of contiguous space, can be loaded now in the memory since the free partitions are made contiguous. So basically जो हमने अभी पीछे देखा था कि प्रोसेस 5 जो थी वो लोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्पेस नहीं था, राइट? पहले 5 MB फ्री था, फिर 2 MB भरा हुआ था, फिर 3 MB फ्री था, फिर 4 MB भरा हुआ था. ओके, तो टोटल हम पे 8 MB फ्री थे, बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं. तो डिफ्रेगमेंटेशन या कॉम्पैक्शन क्या करेगा? ये बेसिकली 2 और 4 MB को एक संग ले आएगा और ये 3 MB, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये 2 MB जो कि भरा हुआ था उसको कॉपी कर देगा नीचे, ठीक है. इस 3 MB के स्लॉट में नीचे की तरफ कॉपी कर दिया जाएगा, तो हम पे टोटल ऊपर हमारे पास 8 MB का स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. वी कैन सी दैट. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हैंडल किया जा सकता है. हाउ वी कैन हैंडल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? बाय यूज defragmentation or compaction. By the technique of compaction or defragmentation, we can handle external fragmentation. ये आपका आंसर हो जाएगा. किस तरीके से हम हैंडल करते हैं? इस तरीके से हम हैंडल करते हैं. अब कॉम्पैक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चीज ऐसी फूल प्रूफ तो होती नहीं है, देखो, ठीक है. तो उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो the efficiency of the system is decreased in the case of compaction due to the fact that all the free space will be transferred from several files to a single place. So सिस्टम की इफिशियंसी गिरेगी. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ने लगता है. मेमोरी यूटिलाइजेशन इन द सेंस, if you are using a slow memory, then because of large chunks are copying here and there very frequently, so the read and write speed will be decreased because it is already reading and writing internally. So
कहीं ना कहीं efficiency गिरेगी. Huge amount of time is invested for this procedure and the CPU will remain idle for all this time. Despite of the fact that the compaction avoid internal fragmentation, it makes system inefficient. So होता क्या है, क्योंकि प्रोसेसेस इधर से उधर कॉपी हो रही हैं तो उन्हें मेमोरी में लोड कराने में या उन्हें रन कराने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीपीयू जो यूटिलाइजेशन है वो गिर जाता है और सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है. हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कम हो गया बट स्टिल हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन घट जाएगा. So let us consider that OS needs 6 nanoseconds to copy one byte from one place to another. So one byte transfer needs 6 nanoseconds and 256 MB transfer needs basically 256 into 2 to the power 20, basically MB को हमने bytes में बदला, into 6 into 10 to the power 9 सेकेंड. ठीक है, तो ये हमें टोटल इतने सेकेंड चाहिए होंगे. एज वी ऑल नो ये काफी बड़ी संख्या होगी. हेंस इट इज प्रूव टू सम एक्सटेंट दैट द लार्जर साइज memory transfer needs more huge amount of the time that is in seconds. So अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक बिट को ट्रांसफर होने में 6 नैनो सेकंड लगते हैं तो 256 MB को एक क्वाइट सम टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. दैट इज बेसिकली हमारा सिस्टम इनएफिशिएंट होता चला जाएगा क्योंकि मेमोरी यूटिलाइजेशन घटता चला जाएगा. ओके, बिटमैप फॉर डायनेमिक पार्टीशनिंग. अब यहाँ पे इसको समझते हैं. द मेन कंसर्न ऑफ डायनेमिक पार्टीशनिंग is keeping track of all the free and allotted partitions. सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट हमारा फ्री है, कौन सा पार्ट हमारा खाली है. देयर इज अ होल. ठीक है, इफ द प्रोसेस इज नॉट लोडेड इन दैट मेमोरी स्पॉट देन इट विल बी कॉल्ड होल, छेद वाला होल. ओके, सो however the operating system uses following data structure for this task. Basically दो प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर यूज करे जाते हैं इस काम को हैंडल करने के लिए. फर्स्ट वन इज बिटमैप एंड सेकंड वन इज लिंक्ड लिस्ट. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिटमैप फर्स्ट. सो बिटमैप is the least famous data structure to store the data. It is the least famous, याद रखना है, not recommended. The process or the whole in allocation unit is represented by a flag bit of bitmap. A flag bit is defined for every bit in allocation unit. However, it is not the general case. It depends on the OS, that is how many bits of the allocation unit it wants to store the flag bit. तो क्या कहना चाहते हैं? What we are trying to say that for each bit there will be a flag bit, right? If it is empty then it will store 0. If it is free, sorry, if it is occupied then it will represented by 1. Okay, that is not general case, but for example we are taking it like that. But for in general, basically for every 4 bits there will be a flag bit. So there is a problem in this kind of situation. The flag bit is set to 1. There is continuously present process at the adjacent bit in allocated unit. Otherwise, it is set to 0. So if there is a process loaded, it will show as 1, and if it is a whole, then it will show 0 at that flag bit. A string of zeros in the bitmap shows that there is a hole in the relative allocation unit, while the string of ones represent the process and relative allocation unit. So, if there is a 1, there is a string of 1, as you can see over here. So, it will be said that it is occupied, and if there is a string of zeros, multiple zeros present in the bitmap,
then it will represent as a whole, a empty slot. Okay, now we will talk about disadvantages. There are lots of disadvantages. So the OS has to assign some memory for bitmap also as well, since it stores the details about allocation unit. So we have to store the bitmap in the memory also. This much amount of memory cannot be used to load any process. Therefore, that decreases the degree of multiprogramming as well as programming. Let's talk about it. So if we are on a 1 GB RAM system, suppose that we have a system which have 1 GB of RAM, and for each bit we want to denote a bitmap, okay, or we can say flag bit. So if we have a 1 GB system, then 500 for 500 MB storage memory addresses, we need a 500 MB bit memory address which will occupy the flag bit. So degree of multiprogramming will be half. Let's take an example. The allocation unit is of 4 bits, then is 0.5 bits. Here 1 bit of bitmap is representing 1 bit of allocation. Okay, so allocation unit is of 4 bytes. Suppose that allocation unit is of 4 bytes, it means that 0.5 bytes. So 4 bits, it means 0.5 bytes. So 1 bit of bitmap is representing 1 bit of memory unit. Now size of allocation is 4 bytes. The size of bitmap will be 1.1 by 5 of the total main memory. Now if we have 1 GB system, then 200 MB will be consumed for bitmap, right? If 200 MB is stored in a bitmap, then the degree of multiprogramming will decrease dramatically, right? 200 MB is a quite large space where many processes can be stored, and for a 1 GB system, it is quite a large space. Suppose that you are using a 8 GB system, then it is a consumer of 2 GB of the space of that main memory for only trying to allocate which like it is trying to see where are the holes and where are the memory allocation is present. Mr. Kumar, yes, it is a live class. Okay, so let's talk further. To identify any hole in the memory, the OS needs to search the string of zeros in the bitmap. The searching takes a huge amount of time, which makes the system inefficient to some extent. So basically, if system is trying to find where I should load a process, then it should go through the whole bitmap and find a proper space. Suppose that we want to load memory of a process of 4 MB, then the computer or the system will try to track that bitmap for a 4 MB space, proper space. Basically, if there is a 8 MB space, then there will be internal fragmentation. If there is 2 MB space, then it can't be used. Then it will try to find a minimum space so that the internal fragmentation is minimum. Okay. तो एक क्वेश्चन है एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें. Basically, there are many websites. You can go and search for it. IIT officer scale 2 or scale 3 MCQs. You will get that. And we also have PDFs available in our application. So please check out that. And there are many MCQ classes available on our channel. You can see all them also. Okay. So linked list for dynamic partition. So we talked about bitmap. So let's talk about the second process, that is linked list. How linked list is different from bitmap.
the better and the most popular approach to keep track the free or filled partitions is using linked. It is the popular approach. First of all, you have to remember that a good approach, a popular approach for dynamic partitioning is linked list for keeping the track of free and filled partitions. In this approach, the operating system maintains a linked list where each node represents each partition. Every node has 3 fields. So for each partition, there will be a link available which will store the data related to that filled partition. Okay. So this link will have 3 fields. First field of the node store a flag bit which shows whether the partition is a whole or some process is inside. So the first field will show that it is a whole or a process is stored. The second field stores the starting index of the partition. In the second part, we have the starting memory address, and in the third field stores the end index of the partition. So basically, that's all. Okay. Basically, if you want IT MCQs, you can go to our YouTube channel as you are on. See, there are many MCQ classes for IT Scale 2, Scale 3 officer. You can watch them and practice for the IT MCQ portion. And be patient, we will take those classes also, MCQ classes. Don't worry. See the whole class, there are many MCQ questions present even in this slide also. Like, let's talk about it. What MCQ questions can be there with this slide only? Okay. Okay. What kind of listing technique is popular for dynamic partitioning? The linked list technique is quite popular for keeping track the field of partition space, right? Why we use linked list in dynamic partition? To keep track the field or whole partition space, right? In dynamic partitioning, linked list second field, what it stores. So basically, it stores the starting index of the partition, right? What third field stores? Basically, it stores the end index of the partition. There are many MCQ questions available in this slide also. Basically, just keep thinking what MCQ questions can come from this point. Okay. Okay, let's talk about linked list more. If a partition is free at some point of time, then the partition will be merged with its adjacent free partition without doing any extra effort, because linked list can be continuous. So there will be no problem if a partition is merged with its adjacent partition. There are some points which need to be focused while using this approach, and these are the OS must be very clear about the location of the new node which is to be added in the linked list. However, adding the node according to the increasing order of starting index is suggestible. So basically, if there is a hole present in between of the continuous memory allocation, then this node should be present at that point between the memory addresses, right? Using a doubly linked list will make positive effects on the performance due to the fact that a node in the doubly linked list can also be keep track of its previous. So it is suggested to use a doubly linked list. Basically, you can go forward and backward while tracing the linked list in doubly linked list. Okay. Doubly linked list allows you to track backwards and forwards in both the directions while you are searching for a free memory allocation point.
So that's all for today. I hope आपको क्लास में मजा आया होगा. मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Yeah, thanks for watching. Basically, you can search the questions related to IT field on the net, and please check out our app once again. Basically, okay, you will find some MCQ questions, sure shot, or you can go to our Telegram channels. There will be MCQ PPTs available and PDFs available. So that's all for today. Meet you in the next class. Thanks for watching.